Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue some important questions of periodic table as well as chemical bonding. Last class I also continued some important questions of these two chapters, but in those two chapters many questions are there. So some rest important question we will discuss today. Okay, so I will send you both question as well as answers. Then only answers of MCQ only, long question or short note I will discuss, and so that you will be benefited by knowing the answers of the MCQs. Okay, so what do you mean by ionization potential? एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम to convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential. Then electron affinity, energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom to convert it into a negatively charged gaseous ion is called electron affinity. Then electrovalent bond, the bond formed between an atom of a metallic element with the atom of a non-metallic element by transfer of electrons is called electrovalent bond or ionic bond. Then covalent bond, the bond formed between two atoms of non-metallic elements by mutual sharing of electrons is called covalent bond. Then coordinate bond, the bond formed by sharing of a pair of electrons between two atoms, but both of the atoms are provided by only one atom. Okay, bond formed by sharing a pair of electrons, but both of the atoms is provided entirely by one atom. Then the bond is called coordinate bond or dative bond. Okay, then give reason of the following. Inert gases have zero valency because they have complete outermost shell. Okay, so noble gases have zero electron affinity because they have complete outermost shell. They are stable and they have complete outermost shell. Okay, then solid sodium chloride does not conduct electricity because solid sodium chloride contains only ions and they have lack of free ions. Due to absence of free ions, they don't conduct electricity. However, in their aqueous solution or molten state, due to presence of free ions, they can conduct electricity. Okay, then sugar solution does not conduct electricity. Sugar solution contains only molecules, not free ions. That's why sugar solution does not conduct electricity. Then fill in the blanks. Dash is the more fundamental property of an element. Atom की number, atomic mass. Answer should be atomic number. The dash compounds generally have highest melting point and boiling point. Electrovalent compound and ionic covalent compound. Answer should be electrovalent compound. Electronegativity of sodium is dash than chlorine in the third period. तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तब सोडियम का कम होना चाहिए, लेस. Methane molecule is an example of dash covalent compound. Methane molecule CH4, so non-polar covalent compound. As we move from left to right in the long form of periodic table, the basic character of its oxide decreases and acidic character increases. क्योंकि तुम लोग को ये याद दिला देता हूँ, एनी मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब बेसिक नेचर, जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड SO2, NO2, P2O5, ये सब एसिडिक इन नेचर. ओके, देन मैच द फॉलोइंग. मेटालिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटालिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. Electron affinity, energy released. Ionization potential, energy required. Okay,
Then next one section B, 6 elements A, B, C, D, E and F have the following atomic numbers: A 12, B 17, C 18, D 7, E 9 and F 11. A 12 means magnesium, then 17 B means chlorine, then 18 C means that is argon, 7 means D nitrogen 7, E 9 मतलब फ्लोरीन 9, then F11 मतलब sodium 11. Which of them have lowest electron affinity? The answer should be sodium. एक्चुअली सोडियम हम लिखेंगे, हम आर्गन नहीं लिखेंगे, आर्गन का 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन सोडियम का सबसे कम होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, लेकिन सोडियम का सबसे कम। व्हिच ऑफ देम हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्योंकि हम एक पीरियोडिक टेबल में जब देखते हैं लेफ्ट से राइट को जाएंगे हम लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। तो which of have them highest electron affinity? That should be chlorine. Which of them has the largest atomic size? लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है, ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर कमेगा। तब लार्जेस्ट एटॉमिक साइज शुड बी सोडियम। ओके, which of these belong to the third period and the highest ionization energy? थर्ड पीरियड में होना चाहिए, ये हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा आर्गन, क्योंकि क्लोरीन नहीं आर्गन, क्योंकि इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। व्हिच एलिमेंट ऑफ देम बिलोंग्स टू द हैलोजन ग्रुप? आइदर तुम फ्लोरीन लिख सकते या क्लोरीन लिख सकते, आइदर एफ या क्लोरीन होता है 17 मीन्स बी, जो कुछ भी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड आयनिक और कोवेलेंट लाइकली टू बी फाउंड व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग फॉलोइंग एटॉमिक नंबर 3 and 7। जब 3 और 7 होता है तब ये दोनों होता है 3 और 7 दोनों एक मेटल एक नॉन मेटल होते हैं, तब ये केस में आयनिक बॉन्ड 6 और 9 6 कार्बन 9 फ्लोरीन, ये होगा नॉन मेटालिक का अंदर होगा कोवेलेंट कंपाउंड बा कोवेलेंट बॉन्ड। देन 11 और 16 होता है Na, 16 होता है सल्फर, तब ये मेटल नॉन मेटल ये होगा आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड। देन 6 और 17, 6 होता है कार्बन, 17 होता है 17 क्लोरीन, ये होगा कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड। देन 8 और 16, 8 होता है ऑक्सीजन, 16 होता है सल्फर, ये नॉन मेटल का अंदर ये होगा कोवेलेंट कंपाउंड। Then next question, an element A belongs to the third period and group 1 of the periodic table. Third period, group 1. So the number of valence electron in its atoms is equal to 1 because number of groups equal to number of valence electrons. Okay. Then valence of the element 1, मेटल और नॉन मेटल, ये अल्काली मेटल फर्स्ट ग्रुप का। नेम ऑफ द एलिमेंट सोडियम, नेम ऑफ द फैमिली टू व्हिच दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू अल्काली मेटल। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को अल्काली मेटल कहा जाता है। ओके, टुडे दिस मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आई रिमेन। थैंक यू वेरी मच।